Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System, Pakistan. This video session is for English text for class 8. This is lecture number 6, language practice, page number 11. Today we are studying the use of used to. The use of used to. We often use used to with a verb to talk about some past habits or routine, something that we regularly did in the past but do not do anymore. बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ यूज्ड टू. यूज्ड टू का इस्तेमाल, कि यूज्ड टू को हम कब इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड टू को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं. तो वी यूज़ यूज्ड टू विद अ वर्ब. हम इसे वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स और रूटीन. ऐसा कोई काम जो हम माजी में, पास्ट में करते थे, उस बात को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूज्ड टू. ऐसा कोई काम, ऐसी कोई हैबिट, ऐसा कोई रूटीन जो हम पास्ट में किया करते थे लेकिन अब वो काम नहीं करते, अब हमारा वैसा रूटीन नहीं रहा, इस बात को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूज्ड टू. ओके, now repeat the definition with me. We often use used to with a verb to talk about some past habits or routine. Something that we regularly did in the past but do not do anymore. Very good. Now look at these examples. The first example is, my father used to swim when he was young. My father used to swim when he was young. मेरे फादर स्विम किया करते थे, तैरते थे जब वो जवान थे, लेकिन अब वो नहीं तैरते क्योंकि अब वो जवान नहीं रहे. The second example is he. अब यहाँ पे कोई, you can use the name of your friend or any other well-known person, well-known player. He used to play football for the local team, but he is too old now. वो लोकल टीम के लिए फुटबॉल खेला करता था लेकिन अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका है. इट मीन्स कि अब वो फुटबॉल लोकल टीम के लिए नहीं खेलता. ओके, he used to play football for the local team but he is too old now. वो लोकल टीम के लिए फुटबॉल खेला करता था लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है. The third example is, we used to go to the seaside on every summer when I was a kid. जब मैं बच्चा था या जब मैं छोटा था तो हम उस वक्त हर गर्मियों में सी साइड जाया करते थे, लेकिन वी डू नॉट गो देयर एनी मोर. लेकिन अब हम वहाँ नहीं जाते. तो वॉट वी हैव लर्नड, वी यूज टू विथ अ वर्ब टू टॉक अबाउट सम पास्ट हैबिट्स और रूटीन. ठीक है, हम यूज टू इस्तेमाल करते हैं किसी ऐसी बात को बताने के लिए, किसी ऐसी हैबिट और रूटीन को बताने के लिए जो हम पास्ट में किया करते थे लेकिन अब नहीं करते. ओके, नाउ take out your English book 8
and open page number 12 for exercise. Okay, we have exercise 1 on page number 12, but its instruction on page number 11. Okay. Let's read instructions for exercise 1. Look at the following table. It has 8 complete sentences. The words in column A and column C are in the right order, but those in column B are all mixed up. Work in pairs. Select the correct verb from column B to complete each sentence and write the complete sentences in your notebook. ठीक है बेटा, करना कैसे है कि column A and column C are in right order. ठीक है, सही सीक्वेंस में ये लिखे हुए हैं, मिक्स्ड नहीं है. लेकिन जो कॉलम बी में वर्ब्स दिए हुए हैं ये उन्होंने आगे पीछे कर दिए, मिक्स्ड कर दिए. ठीक है, तो हमें कॉलम ए और कॉलम बी को पढ़ना है और उसके बाद जो सही वर्ब इसमें फिट होगा वो हमें इसमें ऐड करना है और फिर उस सेंटेंस को अपनी नोटबुक में लिखना है, ऐसे जैसे इन्होंने हमें एग्जाम्पल में बताया है. ठीक है, कैसे? द फर्स्ट वन इज व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू डैश बाइसाइकिल. जब मैं छोटा था मैं बाइसाइकिल चलाता था. तो कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे इसके लिए? बाइट, प्ले, टेक, विजिट, लव, गेट अप, टीज, राइड. राइड. ओके, और फिर अब हमें इसको ऐसे लिखना है. व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू राइड बाइसाइकिल. ओके, नाउ लेट्स डू second one. Isa used to mangoes. Used to mangoes. Love mangoes, visit mangoes, take mangoes, play mango, bite mango. Okay. तो second sentence, तो ये second के साथ होगा तो we will write to here. ठीक है, तो complete sentence क्या बना? Isa used to bite mangoes. Okay. The third one is Seema used to early in the morning. Seema used to early in the morning. क्या होगा इसमें से? आप बताएं. Very good. Get up. 3. Seema used to get up early in the morning. ये कंप्लीट सेंटेंस आपने अपनी नोटबुक में लिखना है. ठीक है. The fourth one is when I was a child my father used to care of me. When I was a child my father used to care of me. तो care of me के साथ कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे? Very good. Take. It's 4. We would write 4 here. Okay. So now you have to do remaining yourself. Our next exercise is exercise 2. I am reading its instruction. Work in pairs. Use the verbs given below to make complete sentences showing past habitual actions. One sentence is given as an example. Write the sentences in your
notebook. My dear students, you have been given these verbs and you have to use these verbs with used to in your own sentences for showing past habitual actions and write the sentences in your notebook. ठीक है बेटा, ये verbs आपको दिए हुए हैं और इन वर्ब्स को यूज टू के साथ यूज़ करना है और अपने सेंटेंस में इसको फिर अपना सेंटेंस लिखना है. एक एग्जाम्पल उन्होंने बताई. द फर्स्ट वन इज ओपन. हर ब्रदर यूज टू ओपन हिज शॉप अर्ली इन द मॉर्निंग. उसका भाई सुबह दुकान खोला करता था. द सेकेंड वी हैव ड्राइव. तो you have to use this verb with used to in your own sentence to show past habitual action. Now look at the board for example. Okay, the second verb we have drive and the sentence is he used to drive fast when he had a sports car. He used to drive fast when he had a sports car. वो तेज़ गाड़ी चलाया करता था जब उसके पास स्पोर्ट्स कार थी. All right. The third we have make. Make. And we have to use this verb with used to. All right. The sentence is, my uncle used to make cricket balls. My uncle used to make cricket balls. मेरे अंकल क्रिकेट बॉल्स बनाया करते थे. ओके. द फोर्थ वन इज गिव. गिव. I used to give a flower daily to my mother when I had many in my garden. I used to give a flower daily to my mother when I had many in my garden. मैं अपनी वालदा को रोज़ाना एक फूल दिया करता था जब मेरे बाग में बहुत सारे फूल थे. I hope you have understood well and now you have to use the remaining verbs in sentences yourself. Okay, now move to exercise 3. Okay, exercise 3 is, when you were in your primary classes, which of your habits did your parents like or did not like? Make a list of your good and bad habits in 2 columns. Some of the good habits are given below as example. ठीक है बेटा, इसमें करना ये है कि in your notebook you have to make 2 columns. 2 columns. First column for the good habits and the second column for bad habits. ठीक है, 2 कॉलम बनाने, एक कॉलम गुड हैबिट्स के लिए और एक कॉलम बैड हैबिट्स के लिए. और इसमें आपने अपनी वो गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स लिखनी है जो प्राइमरी क्लास में आपकी थी. तो इसमें आप अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हो. ओके, तो यू हैव टू डिस्कस योर गुड हैबिट्स एंड योर बैड हैबिट्स विथ योर पेरेंट्स एंड देन राइट दोज गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स in your notebook as homework. Alright, now look at the board for your today's homework. Now take out your diaries and note down your homework, and your homework is do exercise 1, 2 and 3 of language practice in your notebooks. Okay, that's all for today. We will meet inshallah in the next class. Till then, take very good care of yourself. Assalamu alaikum.